Good morning, students. Good morning to everybody. So, how are you guys? So, students, we are into the chapter 2, that is audit strategy, planning and audit program. So, on Friday, we had done considerable part of the chapter relating to audit strategy, relating to audit plan, and we had also understood why planning, in fact, is undertaken. And what are the concrete benefits of planning and audit? We had understood, students, that SA 300 states that objective of auditor is to plan an audit so that it can be conducted effectively, so that its outcome is obtained. We had also discussed about various factors to be considered by auditor while uh, establishing overall audit strategy. We had also discussed what is included in description of an audit plan, like risk assessment procedures and further audit procedures. And we had also broadly discussed the relationship between audit strategy and audit plan, and how both of these affect each other, and that audit planning is not a audit planning is a continuous process. It is a repetitive process. We had understood it in greater detail that audit planning is a repetitive process. It is a iterative process, and continuous process starts with the conclusion of audit of last year and begins with the audit of current year. Yes. So today we'll be discussing about our program. So all your queries, students, relating to chapter 2, you please continue to send. Uh, these will be taken up after conclusion of this chapter. So as we did last time, these will be taken up after the conclusion of this chapter. Okay, so today we shall be also be doing some MCQs relating to this chapter. So students, any query, any doubt you have about this chapter 2, on the matters we discussed on Friday and on the matters which we are going to discuss today during the course of lecture, if you have any doubt, you can send your queries, and these would be resolved after the conclusion of this chapter today itself. So fair enough, guys. So let us start. Yes. So what is audit program? What is audit program, students? Before we go into the details of what is an audit program, students, I would like to ask from you whether any one of you has gone for an audit practically. क्या आप में से कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकली ऑडिट के लिए गया है? Is any one of you in his or her article training?
Yes, students, tell me. Tell me, guys, have you gone for audit of financial statements of a client, of a company, practically? Have you out been there? Any one of you? Yes, guys. No. So probably you have not joined your articles yet. So students, when you would be joining your practical training, so you would be going uh, definitely for audit. So you would be part of the team, and you would be going for audit of financial statements of an organization, of a company, or any other sort of entity. So how would you come to know how audit has to be performed? What are your duties? What you have to do? What you have to check? So all these things, all these examination steps, all these verification steps, all these verification procedures are part of audit program. You will be handed an audit program in which there is a list of examination and verification steps which you have to apply to the financial statements of that organization, of that entity, uh, and to obtain sufficient appropriate audit evidence. So basically, from a layman's point of view, you can understand that that audit program contains all the steps, breakup of all the steps which are to be taken for conducting the audit. Like say you are going to verify the purchases. Okay, so it would be written in the audit program to take these steps, like verify purchase bills, like verify purchase also from stock records, verify purchases from say GST portal. So all these steps would be there in the audit program. So what do we mean by audit program? Audit program is a list of examination and verification steps. What it is? It is a list of examination and verification steps to be applied and set out in such a way that the interrelationship of one step to another is clearly shown and designed, keeping in view the assertions discernible in the statements of account produced for the audit and on the basis of appraisal of accounting records of a client. So the audit report, the audit program is not going to be prepared for you, is not going to be prepared by you. Audit program, you would be handed over an audit program, and it is the responsibility of your principal or the engagement partner to prepare that audit program. Okay, so again it is here clarified more. An audit program consists of a series of verification procedures to be applied to the financial statements. So what these are? These are a series, number of, what do you mean by series? These are a number of verification procedures to be applied to the financial statements and accounts of a given entity.
Okay, so these are a number of steps to be applied to the financial statement and accounts and the books of accounts of a given entity for the purpose of obtaining sufficient evidence. So what is its purpose? Its purpose is to obtain evidence to enable the auditor to express an informed opinion on the financial statement. Now, so unless and until you perform those steps, you gather the evidence. It is only then it is possible that the auditor is able to express his opinion on the financial statements of the entity. So clear, guys? So you have to remember the key word is audit program is a list of verification procedures. It is a list of, you have to remember this word, list of verification procedures. Verification or examination procedures you can remember. So स्टूडेंट्स किसी चीज को समझते हुए अंडरस्टैंड करते हुए यू डू नॉट हैव टू फॉरगेट इट्स बेसिक मीनिंग. उसका बेसिक क्रक्स क्या है, बेसिक फंडा क्या है, वो चीज आपको नहीं भूलनी है. अगर आप बेसिक फंडा याद रखेंगे उस चीज का तो कभी भी उसकी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी. यू विल नेवर गिव ए रॉन्ग आंसर. So remember that audit program consists of a verification of procedures. It is a list of verification procedures. And what is its purpose? It is applied to the financial statements and accounts of the entity for the purpose of obtaining evidence. For the purpose of obtaining evidence which helps the auditor to form an opinion on the financial statements of that very entity. Clear, students? So audit program का मतलब समझ में आ गया आपको क्या है? So audit program is a detailed plan of applying the audit procedures in the given circumstances with instructions for appropriate techniques to be adopted for accomplishing audit objectives. It also means same thing but written in a different perspective. Okay, so remember that audit program is a detailed plan. It is a detailed plan. It is a list of examination and verification procedures which are applied to the financial statements and accounts of the entity to obtain sufficient evidence. To obtain sufficient evidence which helps the auditor in turn to express an opinion on the financial statements. सो क्लियर स्टूडेंट्स, ऑडिट प्रोग्राम का मतलब समझ आ गई आपको. अब स्टूडेंट्स टेल मी whether it is possible for any whether it is possible to develop audit program, one audit program for all the organizations, for all the entities. Whether it is possible to develop a standard audit program for all the organizations which would fit into the requirements of all the companies, of all the entities. Can such an audit program be formulated? Can such a audit program come into existence? Yes guys, any answers? Yes.
You are writing no. Yes, you are correct, students. It is not possible to develop a standardized audit program for all circumstances. Because why? Simple. Because organizations differ from each another in the way they conduct their business, in the way of their nature of businesses, in the way they are regulated by the authorities, in the way laws are applicable to them, and in the way they carry out their operations, and the manner of preparation of their control systems. So there cannot be a one audit program. Remember, students, remember it. It is not practicable to evolve one audit program for all businesses. It is not practicable. So audit program would differ from business to business, from industry to industry, and from company to company, and even from company to company within same industry. It can differ. So for all assignments, for all audit assignments, an audit program would have to be prepared, would have to be developed, keeping in view circumstances applicable to that engagement, to that assignment. Clear, guys? So the assistant to keep an open mind. So what does this mean, guys? So जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ऑडिट टीम में there are members, there are team members. Say there are 4-5 team members. Suppose you are one of them. You are assistant. You are still on the learning curve. You are still learning. You have recently joined your articles. So you are given an audit program. Say while conducting the audit, while actually conducting the audit, you come across something which contradicts what is written in the audit program. Or suppose when you are auditing, you find something for which there are no procedures prescribed in audit program, or there are in audit program some verification steps are stated, but these are not relevant in the assignment you are performing. Or you, by virtue of your actual auditing, what you are doing, you come to know of something which requires some further procedures, which requires attention of your principal, of the engagement partner. So the person performing the audit, all the team members, including assistants, they have to keep an open mind regarding audit program. So if something comes to their notice, they would bring it to the knowledge of their principal, of engagement partner, so that if that matter is relevant, if that matter is necessary, audit program can include that matter. It can be revised. Such matters can be incorporated in the audit program, depending upon your fruitful and constructive suggestions, if these are relevant, provided these are relevant. Okay.
So clear, students, it is, you have to understand that audit program is not a straight jacket closed sort of thing, कि आपको एक डॉक्यूमेंट दे दिया गया है एंड यू हैव टू perform all the procedures according to this document. You do not have to apply your own mind. And if something comes to your notice, then you should not report. It is not that way. It is opposite of that. Okay. If anything relevant comes to your mind, which is relevant in the circumstances, which is relevant to the audit which you are performing, and it is not there in the audit program, you are required, you need to have an open mind, you are required to bring it to the knowledge of the principal. Okay. Periodic review of the audit program. Periodic review of the audit program. So this is also connected with the first point, which we have studied recently. So there should be periodic review of the audit program to assess whether the same continues to be adequate for obtaining requisite knowledge and evidence about the transaction. So like students, it may happen that you are that audit program was prepared for an audit 2 years ago, and in third year also the same audit program is being continued. However, in third year something might have changed in the company, like it may have acquired some new business, or its nature of operations might have undergone change, or its control systems in fact may have undergone change, or there could have been possibility of new regulatory requirements in third year. So which is, all these things may have not been included in the audit program of first year and second year, but the same old audit program is being followed in third year. So therefore, before starting an audit engagement for a year, if previous audit program is followed, it should be reviewed. It should be reviewed, and not only that, if during the year also some changes have taken place and these are not incorporated in the audit program, so these should also be incorporated by undertaking a review of audit program. Therefore, we say that periodic review of audit program is necessary. Okay. So constructing an audit program. Now, how constructing an audit program, what does this mean? This means how an audit program is formed, or how an audit program is developed. Okay. So the audit planning commences at the conclusion of the previous audit, and along with related program, it should be reconsidered for modification as the audit progresses. Okay, so लास्ट ईयर का ऑडिट खत्म हो गया, अगले साल का ऑडिट चालू हो गया. सो जो पिछले साल का ऑडिट प्रोग्राम है उसको इट इज बीइंग मॉडिफाइड इन अकॉर्डेंस with the any new developments and on the basis of review of the internal control. Okay, so while developing an audit program,
the auditor may conclude that relying on certain controls is an effective and efficient way to conduct his audit. However, he may not choose to rely on controls. So when students, when the auditor is preparing the audit program, so he would definitely assess whether he wants to rely upon the control systems of the company, of the organization, and what is the degree, what is the extent of his reliance on the control systems. Say if the control systems of the company are operating effectively and efficiently, then the auditor would place his reliance on those controls, and actual checking may be reduced. Actual area of checking may be reduced. However, if he does not rely upon the control systems, or if he feels that that the control systems are less reliable, then he would be increasing his area of checking, and accordingly he would be increasing his verification procedures and examination steps. So in those cases, the audit program would detail more of the examination and verification steps which are to be undertaken by the audit team, or the persons who are actually conducting the audit. Okay. So audit program, students, audit program also includes that what procedure is to be performed by whom, by which person. Say if the audit team consists of 3-4 persons, A, B, C and D, then it would be written in it that Mr. A would do such activities, B would do such activities, like C would observe the physical inventory counting process, A would verify cash in hand at the close of year. So all of those things would also be stated in the audit program. So students, you have to remember that audit program in a way, it is a division of responsibilities also. Okay, so it is a division of tasks which are to be carried out by the engagement team. It is fixed that this person would perform such a work, and this person would perform another kind of work, another kind of audit work. Okay. So for the purpose of program construction, the following points should be kept in mind. So for developing an audit program, the following points have to be kept in mind, students. These are the important points. Stay within the scope and limitation of assignment. Obviously, the audit program has to be prepared, has to be developed, keeping in mind the scope of the assignment. What the auditor is supposed to provide, what is the outcome of that assignment. Say whether it is a statutory audit, or whether it is an say audit, voluntary audit, which is being desired by the management of the company. So what is its purpose, what is its type? So stay within the scope and limitation of assignment. Prepare a written audit program setting forth the procedures. So audit program, students, remember, it has always to be written.
तो ऑडिट में स्टूडेंट आपको ये याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर that all the evidence, all the things which we call as evidence, these are written. Even when we make oral inquiries, जब हम वर्बल भी किसी से बात करते हैं और उसका कोई रिस्पॉन्स आता है, तो उसको एविडेंस की फॉर्म देने के लिए we have to write it down that this matter was discussed with so and so Mr. X CFO of the company on this date and his reply was that. अगर वो वर्बल बात रह गई तो वो उसका कोई वो एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आता. सो उसको एविडेंस की शेप देने के लिए जो वर्बल इंक्वायरीज भी होती हैं उसमें कोई सिग्निफिकेंट मैटर, यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके, so it would show at the later stage that in fact you had talked to Mr. So and so on this date and this was the result of the talk. Okay, so prepare a written audit program setting forth the procedures that are needed to implement the audit plan. So obviously ऑडिटर ने ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई, फिर ऑडिट प्लान बनाई जिसमें कि प्लान डिस्क्रिप्शन है. आप प्लान्ड प्रोसीजर्स की जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसने प्रोसीजर्स करने हैं, उसकी डिटेलिंग क्या होगी. ओके, दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन ऑडिट प्रोग्राम. So determine the evidence reasonably available and identify the best evidence for deriving the necessary satisfaction. So what is meaning of this? Determine the evidence reasonably available and identify the best evidence. Say students, evidence of one thing may be available from different sources. Okay, like sales. So sales is verifiable from the invoice of the company, invoice raised by the company. Sales is also verifiable from the GST return filed by the company, which is there on the portal. Sales is also verifiable from the party to whom the sales are made. Okay, sales are also verifiable from the copy of e-way bill which is there on the GST portal to show that goods had left the premises to that very party. Say another proof of sales could be transport receipt, bill of the transporter, bill T of the transporter. So the auditor would have to see that which is the best evidence available for deriving the necessary satisfaction. Okay, so apply only those steps which are useful in accomplishing the verification procedures. So in the given situations, what steps are required, what procedures are useful, or if all the procedures are useful, if the auditor thinks so, then he would perform all the procedures. Or if he thinks that he needs to perform some of these procedures, then he would perform some of these procedures. Okay. Include audit objectives for each areas and sufficient details which serve as a set of instructions for assistants involved in audit and help in controlling the proper execution of work. Now what does this mean, guys? Now this means that for all the areas of the audit, like for sales, for purchases, for all expenses, for property, plant and equipment, okay, for inventories, for trade receivables, for trade payables,
for related party transactions. For all these things, the auditor has to see what is his objective, what he tends to achieve by verifying those things, what assertions he is going to verify about these things. Okay, and accordingly he would develop a series of verification procedures for the team members, for the assistants, so that outcome of audit is achieved. Okay, consider all possibilities of error and coordinate the procedures to be applied to related items. Now, while devising an audit program, the auditor would consider probabilities of error, that I am obtaining evidence from this area, but there could be possibility of errors in it. So he may try to obtain evidence from another area. Okay, so he would take into account all the possibilities and all the possibilities of errors and coordinate the procedures. And the audit program has to be devised in such a manner that there is a coordination, that all the procedures are coordinated. These are not wayward. Okay, so this chart is given. So all these points you have to remember. A question can come that what useful points have to be kept in mind by the auditor while developing an audit program. Simple 3 marks question, 4 marks question, where you have to write these 4 points. Stay within the scope of engagement, prepare a written audit program. Okay, include audit objectives for each area. So all these points you have to write. So students, when you are studying, also understand what type of questions can be asked in the exam. So develop an ability in yourself to see what kind of questions can be asked, किस बात पे क्वेश्चन बनता है. So you have to develop in yourself that ability. As I have been telling you, in a CA exam, every time new questions are being asked. Every time new questions are being asked. Only few questions are of repetitive nature. So it would be useful for you to develop such an ability so that you can spot those important areas from where questions can be asked in the exam. You try this technique, students, and you would find it useful. Not only in this subject, but for every subject, you would find it useful. You have to be alert. Your eyes have to be alert for those things which are significant from an examination point of view. So this would help you very much in preparing for your exams and answering in the exams also properly. Okay, so audit program designed to provide audit evidence. Audit program is designed to provide audit evidence. So audit program का क्या मतलब है students? Audit program is designed to provide audit evidence. इसका objective क्या है? It is designed to provide audit evidence. So audit evidence के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था students, you would be learning in chapter 4. लेकिन यहां पे हम ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन को टच करते हैं
नॉट डिटेलिंग, सिर्फ ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन को वी वुड बी टचिंग. सो यू वुड बी रीडिंग अबाउट ऑडिट एविडेंस. वो पूरा का पूरा चैप्टर ही चैप्टर 4 ऑडिट एविडेंस के ऊपर है. So audit evidence is the information used by the auditor in arriving at the conclusions on which auditor's opinion is based. तो स्टूडेंट्स आप इस डेफिनेशन को ध्यान से समझें. ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन्स. That information which is used by the auditor in arriving at conclusions on the basis of which his opinion is based. से अगर मैं सेल्स चेक कर रहा हूं और मैंने डेटर से कंफर्मेशन भेजी है, तो दूसरी थर्ड पार्टी डेटर से कंफर्मेशन आ जाती है, तो देन what do I get? I get a sufficient appropriate audit evidence on the basis of which my opinion is based. So I would be using this information in arriving at conclusions. So अगर थर्ड पार्टी से जिसको मैंने कंफर्मेशन भेजी है ट्रेड रिसीवेबल के लिए और वो पार्टी कंफर्म करती है कि यही बैलेंस है, तो what satisfaction I am getting? So I am getting the satisfaction that the balance in company's books of accounts and that party's books of accounts is same, and this balance exists, and the party has in fact made sales to that party. So I would be correlating both their statements. So I am using this information to arrive at some conclusion. So it is a form of audit evidence. Okay. So audit evidence includes both information contained in accounting records, underlying financial statements and other information. So audit evidence में जो information है वो खाली accounting records तक restricted नहीं है. दूसरी भी information, any information which is not contained in accounting records is also audit evidence. Okay, like there may be some contracts, so it is also if I am going through the contents of the contract, so it is also that sort of audit evidence. Okay. So evidence is the basis on which the auditor forms his opinion. So remember, it is only on the basis of evidence. It is only on the basis of evidence that auditor forms opinion. He has to get evidence. He has to get sufficient appropriate audit evidence on the basis of which he has to form the opinion. Now, what is the best evidence which gives him the satisfaction? It depends upon his professional judgment. It depends upon his professional knowledge, his experience, and in accordance with the procedures which are prescribed in standards on auditing. Okay, it is not possible to say that this evidence is always the best or this evidence is always least suited. It is not suitable. So we cannot treat the things in such a way. It has to be evaluated in particular circumstances of each case. Okay. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर आपको? सो ऑडिट प्रोग्राम क्लियर? इसके बारे में स्टूडेंट्स, एविडेंस कहां कहां से ऑडिट लेता है, ऑडिटर लेता है, ये भी इसके बारे में भी वी वुड बी स्टडिंग इन चैप्टर 4.
यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है कि इन इन जगहों से ऑडिटर ऑडिट एविडेंस लेता है। लाइक डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन। डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन का क्या मतलब है? बाय परयूजिंग द डॉक्यूमेंट्स, बाय सीइंग द डॉक्यूमेंट्स। से इफ आई एम सीइंग द लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट्स, so or if I am going through the purchase bills, if I am going through the expenses bills, so these are, I am examining the documents. Okay. Or say physical examination. So what is the meaning of physical examination? Like say I am observing the inventory counting process, I am verifying the stocks of say shirts in a company. So I would be physically examining, I would be examining the condition of shirts also. So it means it is a sort of physical examination. Then statements and explanations of management officials and employees. So obviously I would be seeking information. I would be seeking information from the management, from other persons within the company. I would be asking information from them on various aspects relating to the working of the company. So all these are are sources from which audit evidence is obtained. Okay. Statement and explanation of third parties. थर्ड पार्टीज जैसे कि मैंने आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का एग्जांपल बताया. It is a statement from third parties. It is an confirmation request which has been responded to by the third party. Arithmetical calculations by the auditor. So you can say recalculation. So it is also one of the procedures performed by the auditor. Say when I am seeing some bill, okay, I recalculate the calculations. Okay, so this is also is a sort of procedure by which I am obtaining evidence that calculation is correct. Next is state of internal control and internal checks. So obviously company में क्या क्या systems हैं, how the company is being run, क्या वो controls effectively काम कर रहे हैं कि नहीं. So all these things, when I as an auditor would check all these things, when I as an auditor would verify all these things, so I would be gaining an evidence and I would be putting those things in writing. Okay, so I would be putting those things in the writing. Interrelationship of various accounting data. This is also very important, guys. Interrelationship of various accounting data. So students, इसके बारे में भी आप लेटर पढ़ेंगे. जैसे आप बैलेंस शीट को स्टडी कर रहे हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या क्या जैसे आप रेशियो एनालिसिस करते हैं, आपने पिछले 3 साल का उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखा कंपनी का, ठीक है, तो आपने उसका 3 साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देख के क्या एनालिसिस किया, किस कंक्लूजन पे आप पहुंचे. सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स. ओके. सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स. So other records, subsidiary and memorandum records means certain records जिसमें कि कोई which are separate from books of accounts, like memorandum records, certain registers जिसमें कि कुछ information है लेकिन वो उसमें फाइनेंशियल एंट्रीज नहीं है, उसमें फाइनेंशियल एंट्रीज नहीं है, वो एक रजिस्टर्स हैं जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन, important information is written. Okay, so these are memorandum records. Minutes, you know everybody, guys,
minutes of meetings, record of meetings, कि उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, that is written in the form of minutes, that is written in the form of the minutes. So minutes help an auditor to understand what decisions were taken at that meeting, and who are the persons who attended the meeting, what was the agenda of the meeting, and what important decisions were arrived at those meetings. Okay. Subsequent action by the client and by others. And से आपने कुछ क्लाइंट को डेफिशिएंसी बताई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, तो क्लाइंट ने उसका क्या, हाउ डिड द क्लाइंट रिस्पॉन्ड, डिड द क्लाइंट रिमूव दैट डेफिशिएंसी? से आप कंपनी का कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू कर रहे हैं और आपको लगता है कि कंपनी के कंट्रोल सिस्टम में ये डेफिशिएंसी है. ओके. So आपने as an auditor you told that deficiency to the client. Okay. So whether client has removed that deficiency. So this is the meaning of subsequent action by the client. So some examples are given कि किस सिचुएशन में कौन सा एविडेंस बेस्ट है. लाइक फॉर कैश इन हैंड, फॉर कैश इन हैंड बेस्ट एविडेंस इज काउंट. ऑब्वियसली कि कैश इन हैंड को वेरीफाई करने के लिए अगर आप उसको फिजिकली काउंट कर लेते हैं तो दैट इज द बेस्ट एविडेंस. So what does it show? This shows that the cash physically existed on the day you counted, and whether it tallied with the cash shown in books of accounts or not. Similarly, for investments pledged with the bank, a banker certificate. अब कुछ अगर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बैंक के पास प्लेज की हुई हैं, तो उसका बेस्ट एविडेंस क्या होगा कि बैंक कंफर्म कर दे, इंस्टेड ऑफ कि आप पार्टी के एविडेंस पे रिलाई करें. अगर बैंक इंडिपेंडेंटली कंफर्म कर दे कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये हमारे पास प्लेज हैं, so that would be the best evidence. Okay students. So the auditor has to place appropriate weight on each piece of evidence and accordingly should prescribe the priority of verification. So obviously the auditor would see from how many sources the evidence is available, and accordingly he would the weight, he would determine which evidence from which type of source is the best in the given circumstances, and accordingly he would design his audit procedures keeping in view those requirements, keeping in view the examination procedures which are required. Okay. So now we come to advantages and disadvantages of an audit program. So students, आपको, if you have rightly understood the meaning of audit program, the objective of audit program, you can yourself well make out the advantages and disadvantages yourself.
अगर आपको ऑडिट प्रोग्राम का मतलब समझ में आ गया है तो उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस लिखना स्टूडेंट्स आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या एडवांटेजेस है? दीज आर वेरी सिंपल। इट प्रोवाइड्स द असिस्टेंट कैरिंग आउट द ऑडिट विद क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ऑडिट प्रोग्राम एक क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है असिस्टेंट्स को टू कैरी आउट देयर वर्क। Say you are new to the job, you have gone to the audit for the audit of the client for the first time. You do not know the client, so how would you see what is to be done, what is to be performed? So here comes in picture the audit program. So audit program would tell you, it would give you clear set of instructions, what is to be done by you, what steps are to be performed by you. Okay. And audit program is essential to give a total perspective of the work. So because what is its meaning, guys? As I have told you, audit program relates to each aspect of the financial statements, like for receipts, for payments, for all the assets, for all the liabilities. It relates to each aspect. So by having a look at the audit program, a bigger picture, a broader picture comes into your mind, that this is the detailed plan, that these are the things which we have to do for performing an audit. Now you as an assistant may be related to only one area. Okay, so you as an assistant may be related to only one area of the audit, but by seeing the audit program, you can get a larger perspective. Selection of assistants for jobs on the basis of capability becomes easier. So this is also a sort of indirect advantage of audit program. So I would not say that it is a direct advantage. It is an indirect advantage of an audit program. Selection of assistants for the jobs on the basis of capability becomes easier when the work is rationally planned, defined and segregated. Say अगर ऑडिटर पहले से ऑडिट प्रोग्राम अच्छी तरह से प्लान कर ले कि किस एरिया में मेरे को क्या चेकिंग करनी है, तो वो अपनी टीम की सिलेक्शन भी अच्छी तरीके से कर सकता है. तो ये मीनिंग है. इनडायरेक्टली it helps in selecting experienced and better persons. So it is a sort of indirect advantage of an audit program. Okay. Without a written and predetermined program, work is necessary to be carried on the basis, yes, on some basis of some mental plan. So obviously, unless until you have got a written program, you would be carrying work according to what is going on your mind. So it serves as no evidence. It serves as a no plan. It is only a mental plan only. What is going on in a person's mind. So therefore, it is necessary to write a suitably designed audit program, to jot it down. In absence of it, it remains only a mental plan. Okay. And another advantage is the assistants, by putting their signatures on program, accept responsibility. Now students, this is also very important. When you put your signature on the program, it means that you as an articled assistant, you have
accepted the responsibility for work to be performed by you, that you would perform your work diligently. It is an itself a evidence that you have accepted the responsibility of performing the audit work pertaining to the selected area for which you are responsible. Okay. So principal can also control the work. So if the audit program is designed properly, so obviously it not only helps the principal in selecting his team, but it also helps in coordination of the work, because the engagement partner or the principal, he would be knowing that this work is to be performed by, say, Mr. X, and this work is to be performed by Mr. Y, and he would be judging the evidence gathered by both the persons, and it would be possible for him to correlate. Okay. It serves as a guide. This is also a indirect advantage, I would say. It serves as a guide for audits to be carried out in succeeding year. कि अगले साल में जो ऑडिट होना है उसके लिए भी एक इंडिकेटर है. So this is also an indirect advantage. A properly drawn up audit program serves as evidence. So this is the most important. This is the most important, guys, advantage of audit program. Now, what is this point? कि audit program is itself an evidence. Audit program एक evidence is itself an evidence that auditor performed his work properly, that auditor planned his work. It planned his work properly. Say at later stage, if there is a situation that there is a complaint against the auditor that he did not perform his work properly, then audit program evidences, it shows, it is a proof that audit was indeed carried out according to a plan, and these were the procedures, these were the examination procedures, these were the verification procedures which were performed by the auditor and his team during the course of audit. Okay. So students, these are all the advantages. Now, can there be disadvantages of audit also? Can there be disadvantages of audit also? क्या ऑडिट प्रोग्राम के डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं? यस स्टूडेंट्स, क्या ऑडिट प्रोग्राम के डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं? क्या इसकी कोई डीमेरिट्स भी हैं? क्या डीमेरिट्स हैं? आप बिना मॉड्यूल में देखे स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉमन सेंस से बताएं क्या इसकी डीमेरिट्स हो सकती हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं? क्या किसी रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम के डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं? आप अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से बताएं. ये स्टूडेंट्स, जो मॉड्यूल में लिखा है उससे मत देखें, आप अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से बताएं कि क्या कोई डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम के. ये स्वाति आप कह रही हैं कि टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स. नहीं स्वाति, ये डिसएडवांटेज तो नहीं है. टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स तो the procedures which have to be performed, the auditor would have to perform. There is no option.
Yes, anybody else? Yes. The disadvantages are, students, the work may become mechanical. So ये स्टूडेंट्स इस बात से रिलेटेड है कि अगर मैं हर एक चीज ऑडिट प्रोग्राम में लिख देता हूं तो ये कहीं ना कहीं इनिशिएटिव किल करती है। ये जो आदमी ऑडिट करने जा रहा है, जो टीम मेंबर्स ऑडिट करने जा रहे हैं, ये उनका इनिशिएटिव किल करती है। दैट दे मैकेनिकली फॉलो the points which are stated in the audit program. So this can be the possible disadvantage. But you have also to remember that what are the disadvantages, what are the so-called disadvantages, they can be easily removed. What are the so-called disadvantages? They can be easily removed by a good engagement partner, by good principal, by giving. How this can be removed? Now this can be removed by giving freedom to the team members, by encouraging them to bring to the light of the engagement partner any new thing which they have noted during the course of audit. So all these so-called disadvantages, which we call as disadvantages, these can be overcome with the help of imaginative planning and by encouraging the team members in proper way. Okay. So another disadvantage is that program often tends to becomes rigid and inflexible. So these are same things relating to first. Okay, these are similar points. And third point is, guys, it is also very interesting. Inefficient assistants may take shelter behind the program. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? से स्टूडेंट्स मान लीजिए आप में से कुछ लोग हैं जो कि आई एम नॉट सेइंग दैट somebody among you is, say, assume that somebody is inefficient. Okay, so वो तो जो ऑडिट प्रोग्राम में लिखा है वो असिस्टेंट तो टीम मेंबर, एज ए टीम मेंबर वो वही करेगा, और कुछ नई चीज आती है तो वो कह देगा कि सर ये तो ऑडिट प्रोग्राम में लिखा ही नहीं था, so therefore I didn't do anything. So the point is, inefficient assistants may take shelter behind the program. If a person is inefficient, he may take shelter behind the program. वो अपनी कमियां ऑडिट प्रोग्राम के जरिए छुपा सकता है. Okay, but again it is also a so called disadvantage. If the auditor properly encourages his team, then and if he chooses the right persons, these disadvantages can be overcome. A hard and fast audit program may kill the initiative of efficient and enterprising assistants. This is also connected with this point कि जब ऑडिट प्रोग्राम फिक्स हो जाता है, एक रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम आपने लिख दिया, तो ये इनिशिएटिव टीम मेंबर्स का खत्म करता है. ये इनिशिएटिव टीम मेंबर्स का खत्म करता है टू डिजाइन देयर, टू गिव ए फ्रेश थिंकिंग, टू हेल्प
to help give some better thoughts, to help give some fresh thinking, to help give some fresh perspective, so that initiative is lost in a hard and fast audit program. So all these disadvantages, students, which we are discussing, these are only so called disadvantages. ये in fact disadvantages नहीं है, these are so called. Remember, these are so called disadvantages. So all these disadvantages can be eliminated. These can be eliminated by proper supervision of work, and there is a duty on the auditor, on the part of auditor also, to be receptive towards what feedback is given by the team members. से आप ऑडिट करने जाते हैं, आपको कोई नई चीज मिलती है जो ऑडिट प्रोग्राम में नहीं है, और आप अपने एंगेजमेंट पार्टनर को आके बताते हैं, और वो सपोज उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेता. So obviously your motivation will also come down, your morale will also come down. So there is also responsibility on the part of auditor to see that whatever constructive suggestion is given by the team members who are conducting the audit, so they also he also takes into consideration their suggestions if they are relevant. He should take into consideration all the suggestions of team members provided they are relevant. Okay. So students, ये क्वेश्चन है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का, इसको आप पढ़ें स्टूडेंट्स. रोहित undergoing practical training is part of engagement team conducting audit of a company engaged in manufacturing of paints. रोहित आर्टिकल ट्रेनिंग कर रहा है और एक टीम का पार्ट है जो कि एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जो कि पेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है. नाउ ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद ऑडिट प्रोग्राम पर्टेनिंग टू सेल्स. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स के बारे में वेरिफिकेशन की है. सो उसमें कई बातें उसके ऑडिट प्रोग्राम में लिखी हुई हैं सेल्स के बारे में, कि उसको इनवॉइसेस चेक करने हैं, रेट लिस्ट चेक करनी है, पोस्टिंग इन डेटर्स अकाउंट चेक करने हैं, ई-वे बिल्स सैंपल बेसिस पे चेक करने हैं. उसके ये ऑडिट प्रोग्राम में स्टेप्स लिखे हुए हैं. So during verification, he notices that many e-way bills have been cancelled by the company within 24 hours of their generation in month of March. There is no specific instruction in audit program in this regard. He keeps mum. Is attitude of Rohit proper? तो स्टूडेंट्स बताएं क्या उसका एटीट्यूड प्रॉपर है? रोहित जो है वो देखता है जब वो ऑडिट कर रहा है कि ई-वे बिल्स जो हैं मार्च के महीने में कंपनी ने ई-वे बिल्स बनाए और कैंसिल कर दिए. 24 घंटे के अंदर ही उसने कैंसिल कर दिए. तो वो अपने प्रिंसिपल को इस बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है. तो क्या उसकी ये अप्रोच ठीक है? तो उसकी अप्रोच ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बिल्स ई-वे बिल कैंसल हो रहे हैं. तो इसका रीजन पूछना है मैनेजमेंट से कि ई-वे बिल इतने बने, इतने इनवॉइसेस बने और इतने कैंसिल क्यों हुए? क्या उसके पीछे द ऑडिटर वुड हैव टू फाइंड आउट कि उसके पीछे क्या रीजन है. क्या कंपनी फेक सेल बिलिंग तो नहीं कर रही, फेक बिलिंग तो नहीं कर रही? So the auditor would have to find out. So it raises a suspicion. Yes students, मम का मतलब होता है चुप रहना.
मम का मतलब होता है चुप रहना, ही कीप्स मम। मम का मतलब है चुप रहना, वो चुप रहता है क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। तो क्या रोहित का एटीट्यूड प्रॉपर है? नहीं, रोहित का एटीट्यूड प्रॉपर नहीं है। मैनेजमेंट से पूछना है, हो सकता है कोई जेन्युइन रीजन हो कि ईवे बिल कैंसिल हो गए, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ईवे बिल्स कैंसिल हो रहे हैं मार्च के महीने में, वो भी। ऐसा क्यों है? तो रोहित हैज टू इन्फॉर्म हिज प्रिंसिपल्स। सो स्टूडेंट, ये एक सैंपल ऑडिट प्रोग्राम दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ एन एंटिटी। ये खाली सेल्स के बारे में है। ऐसे ही ऑडिट प्रोग्राम जो होता है दिखने में, ये तो सिर्फ सेल्स के बारे में है, पूरा ऑडिट प्रोग्राम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एंटिटी के बारे में होगा। वो परचेजेस के बारे में भी होगा, वो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में भी होगा, वो डेटर्स के बारे में भी होगा, वो क्रेडिटर्स के बारे में भी होगा। ओके। सो क्या क्या है इसमें, किस कंपनी का, किस कंसर्न का है, कौन से साल का है, किसने ऑडिट प्रोग्राम बनाया, किसने रिव्यू किया, किसने अप्रूव किया। ओके, विद डेट। और क्या क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने हैं। जैसे अब सेल्स के बारे में इंस्ट्रक्शन है, वाउच फ्यू सेल इनवॉइसेस फ्रॉम कॉपीज अवेलेबल इन रिकॉर्ड ऑफ द कंसर्न, कि आप कुछ सेल इनवॉइसेस चेक करने हैं आपको। ये भी लिखा होगा एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कितनी है, बेसिस ऑफ सैंपल क्या है, कि जो आपने सैंपल लिया है किस बेस पे लिया है। इट वुड ऑल इट वुड बी इट वुड बी देयर, एंड डन बाय whom, किसने, हु वेरीफाइड इट। कितना चेक किया। नाउ यू वुड राइट दैट इतने बिल इस महीने के चेक किए, एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ सैंपल, वो आपका सैंपल का बेसिस क्या है, दैट यू वुड ऑल्सो राइट। सैंपल का बेसिस क्या होगा, सैंपलिंग के बारे में भी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑडिट एविडेंस वाले चैप्टर में। सो ट्रेस दीज इनवॉइसेस इनटू द अकाउंट बुक्स ऑफ द कंसर्न। अब आपने इनवॉइसेस तो पार्टी की फाइल में लगे हुए हैं या सेल बिल बुक में है, इनवॉइसेस चेक कर लिए। अब उस इनवॉइसेस को आपको चेक करना है कि उसके सेल्स अकाउंट में और जिस पार्टी को सेल किया है डेटर अकाउंट में, वहां पे पोस्टेड है कि नहीं है, जो भी आपका सैंपल है। ओके। वेरीफाई फ्यू इनवॉइसेस विद ई वे बिल्स। ऑडिट प्रोग्राम ये भी कह रहा है कि जो इनवॉइसेस आपने चेक किए हैं उसका ई वे बिल भी चेक करो। तो वो आपको ई वे बिल पोर्टल पे जाके वो ई वे बिल चेक करने हैं। ओके। ट्रेस फ्यू सेल्स इनवॉइसेस इनटू द स्टॉक रिकॉर्ड्स। जो सेल इनवॉइस आप चेक कर रहे हो, जो सैंपल है आपसे फरवरी के मंथ में आप 20 सेल्स इनवॉइस चेक किए हैं आपने, तो आप ये भी देखोगे कि वो सेल्स इनवॉइस में जो क्वांटिटी है वो स्टॉक रिकॉर्ड से माइनस हो गई है। अगर कोई चीज सेल हो रही है तो उसका स्टॉक भी उतना रिड्यूस होना चाहिए, लॉजिकल। ओके। ट्रेस ऑल्सो फ्यू सेल्स इनवॉइसेस इनटू अकाउंट्स ऑफ बायर्स। कुछ इनवॉइसेस को बायर्स के अकाउंट में पोस्टिंग चेक करनी है। सो this is just a one part relating to sales, some of the verification procedures which which are depicted in your module pertaining pertaining to relating to sales. Okay. सो स्टूडेंट्स, इसके बाद एक केस स्टडी है, तो ये केस स्टडी भी स्टूडेंट्स मैं सोच रहा हूं कि आप करें जो मॉड्यूल में है। आर यू रेडी फॉर द केस स्टडी? तो स्टूडेंट्स, ये केस स्टडी आप इसको
थोड़ा गो थ्रू हो जाए, ये आपके स्क्रीन पे विजिबल है। कौर एंड एसोसिएट्स, a sole proprietor firm of Simran Kaur is offered appointment of auditor of a company engaged in manufacturing of automobile components for the first time। एक कंपनी है जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बना रही है, ऑटोमोबाइल गाड़ियों में यूज होने वाले पार्ट्स बना रही है, उसकी अपॉइंटमेंट के लिए एक ऑडिट फर्म को ऑफर है। शी इज ऑफर्ड, अब आप ध्यान से समझिए इसको, शी इज ऑफर्ड, अभी उनको ऑफर मिली है। शी इज फैक्ट चेकिंग अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी एंड की मैनेजरियल पर्संस, मैटर्स सच एज कॉम्पिटेंस ऑफ स्टाफ आर ऑल्सो कंसिडर्ड, द अपॉइंटमेंट इज सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टेड बाय हर। अब उनको ऑफर मिली है तो वो देख रही हैं कि मैनेजमेंट के लोग कैसे हैं, उनकी इंटीग्रिटी कैसी है, और क्या वो इस कंपनी का ऑडिट हैंडल कर सकती हैं, क्या उनके स्टाफ मेंबर्स में ये कॉम्पिटेंस है कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली कंपनी का ऑडिट हैंडल कर सकें। अल्टीमेटली वो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लेती है, शी एक्सेप्ट्स द अपॉइंटमेंट। शी इज ऑल्सो taking into account number and location of branches of the company and requirements of schedule 3 and expected time by which audit has to be completed, keeping in view statutory requirements। so अब वो जब ऑडिट स्टार्ट कर रही हैं तो वो ये देख रही हैं कि कंपनी की कितनी ब्रांचेस थी, ब्रांचेस हैं, उनकी लोकेशन कहां पे है, और शेड्यूल 3 जो कंपनीज एक्ट है जिसमें कि फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपनीज की, उसका क्या रिक्वायरमेंट है और कितना टाइम लगेगा उसको ऑडिट कंप्लीट करने में, कीपिंग इन व्यू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वो एक कंपनी है तो उसको कितना टाइम लगेगा ऑडिट कंप्लीट करने में। और वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है यहाँ पे कि कंपनी है तो इसका मतलब इसकी एजीएम भी होनी होगी, और एजीएम की डेट आपको पता है कंपनीज एक्ट में आप पढ़ोगे स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 मंथ्स के अंदर एजीएम की डेट फॉल करती है। तो इनिशियली शी हैज थॉट इट प्रॉपर टू इंक्वायर की एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी इन प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स एंड प्लान फॉर द सेम। तो उसने सोचा है कि वो कुछ कंपनी के जो इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज हैं उनसे कुछ इंक्वायर करेगी, कुछ सवाल पूछेगी, और she has also planned to visit 3 plants of the company, और वो कंपनी के 3 प्लांट्स को विजिट करेंगी, ये उसने प्लान किया है। और इस इंक्वायरी और प्लान का पर्पस है उसका कि आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ओके, उसका पर्पस ये है कि मार्केटिंग के आदमी से जो उन्होंने क्वेश्चन करने हैं और जो कंपनी के प्लांट्स विजिट करने हैं, सी she wants to identify and assess risk of material misstatements। उसका पर्पस ये है। ओके, a detailed set of instruction has been prepared by our office and it has been handed over to assistants। these set of instructions include क्या क्या करना है, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग क्या करनी है, परचेज सेल्स और अदर आइटम्स ऑफ इनकम के बारे में। और जब वो इंस्ट्रक्शंस इनकी इस टीम को फॉलो कर रही है तो उनको शी इज बीइंग टोल्ड, उसको बताया जाता है कि कंपनी इज प्रोड्यूसिंग सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हाउएवर नो इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन टू एंगेजमेंट टीम। उसको ये बताया जाता है कि कंपनी जो है ऑटोमोबाइल पार्ट्स बना रही है, तो ऑब्वियसली उसमें स्क्रैप बहुत होगी मैन्युफैक्चरिंग में, तो स्क्रैप काफी क्वांटिटीज में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसके बारे में ऑडिट प्रोग्राम में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ओके,
तो इस ये केस स्टडी स्टूडेंट्स आपने पढ़ ली। एक बार दोबारा मैं इसको, आई हैव रेड इट आउट, एक बार फिर आपको आपकी स्क्रीन पे है और मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। यस, सो स्टूडेंट्स आपने पढ़ ली केस स्टडी। अब क्वेश्चन। Now, auditor is fact checking about promoters and key managerial persons. She is also considering competence of staff to perform engagement. What is she trying to do? अब बताइए इसका क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स। ऑडिटर जो है सिमरन कौर, वो प्रमोटर्स के बारे में फैक्ट चेक कर रही है, उनकी इंटीग्रिटी वेरीफाई कर रही है, और वो ये भी देख रही है कि क्या उसके पास कॉम्पिटेंट स्टाफ है टू टू कैरी आउट द असाइनमेंट, टू परफॉर्म द असाइनमेंट। सो व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू? यस, व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू? यस, आंसर्स। इन चार में से क्या आंसर है स्टूडेंट्स? शी इज एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी, शी इज कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, शी इज डिजाइनिंग ऑडिट प्लान, और शी इज चेकिंग हर कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स। Yes, all of you have written correctly. Yes, guys. Answer is B. She is conducting preliminary engagement activities. Preliminary engagement activities में we had studied that the auditor sees whether the client should be accepted, or in case of existing client whether the relation should be continued, or in case of a new client whether the client should be accepted. And it is also required to be seen by the auditor whether one has the capability to perform the assignment, what is the competence of his team. So all these things are included in preliminary engagement activities. So she is conducting preliminary engagement activities. So answer is B. Yes, all of you have written correctly, guys. Now we see question number 2. Consideration of number and location of branches, requirements of financial reporting framework, and expected time of completion are relevant factors for which of the following? Now she is also considering कि मेरे को इन ब्रांचेज, इतनी ब्रांचेज हैं और इतना टाइम लगेगा ऑडिट कंप्लीट करने के लिए। ओके, और शेड्यूल 3 की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सब चीजें किस चीज का फैक्टर है, किस चीज के डेवलप करने में ये सब चीजें सोची जाती हैं। डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान, एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, डिजाइनिंग ऑडिट प्रोग्राम, या डिजाइनिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। यस, yes students, question number 2, what should be the answer? Without seeing the answer in your module, guys, without seeing the answer in your module, अगर आप मॉड्यूल से देख के कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे। ये केस स्टडी पेपर में तो आएगी नहीं ऐसे, सेम टू सेम इट इज नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जाम्स। yes, yes, all of you are written correctly. Answer is B. These are all the factors which are
यूजफुल इन एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, कि कितने टाइम में काम मेरे को खत्म करना है, ओके, कितने टाइम में, और क्या शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स है, कितनी ब्रांचेस है, वो सब चीजें जो है ऑडिट स्ट्रेटेजी डिटरमिन करने का पार्ट है। ये सब चीजें मैं पहले ही डिसाइड करने वाला हूं कि मेरे को ऑडिट कब तक खत्म करना है, ऑडिट रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है, और उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फर्म की क्या फ्रेमवर्क की क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये तो पहले ही मेरे को पता होगा, तभी मैं ऑडिट प्लान बना पाऊंगा। ओके, सो इसलिए ये these are the factors for establishing overall audit strategy. Now number 3, taking into account description of planned inquiry and visit, which of the following statements is true? अब स्टूडेंट्स केस स्टडी में लिखा हुआ है कि वो कंपनी के 3 प्लांट्स विजिट करने की उसकी प्लान है, और कुछ जो मैनेजमेंट के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे उसने कुछ इंक्वायरी करनी है, कुछ सवाल जवाब करने हैं। ओके, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑप्शन इज ट्रू? यस, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑप्शन इज ट्रू? क्वेश्चन नंबर 3। 4 ऑप्शन दी हुई है। प्लान्ड इंक्वायरी एंड विजिट फॉल इन एरिया ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, planned inquiry and visit are planned risk assessment procedures and fall in the field of audit. This is not related to audit planning, and D is planned inquiry and visit fall in the scope of audit program. Yes, students, without seeing the module. Now the correct answer is B. So students, उसमें केस स्टडी में लिखा हुआ था कि ये प्लान्ड इंक्वायरी, उसने 2 आदमी से सवाल जवाब करने हैं, 3 जगह विजिट करनी है, और इस इन सब चीजों का उसका पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, उनको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कहते हैं। उनको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कहते हैं, जैसा कि आपने इस चैप्टर में अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। दीज प्रोसीजर्स आर कॉल्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर इंक्लूडेड इन ऑडिट प्लान। कौन कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ऑडिट प्लान करता है, वो ऑडिट प्लान में लिखा होता है। ओके, तो थर्ड आंसर इज डी। नाउ फोर्थ इज, what is detailed set of instructions given to assistants in engagement team known as? एंगेजमेंट टीम को डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ऑडिट करने के लिए, तो वो क्या कहते हैं उस चीज को? इट्स वेरी सिंपल गाइस, बहुत सिंपल है। यस, व्हाट इज डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू असिस्टेंट्स इन एंगेजमेंट टीम नोन एज? What is detailed set of instructions given to the
assistants in engagement team known as? Very simple, students. Very simple. So the answer is audit program. The answer is C, audit program. Detailed set of instructions. क्वेश्चन स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस पूछ रहा है आपसे कि जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपको क्या क्या करना है, उस चीज को क्या कहते हैं? उस चीज को कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम. ओके, ऑडिट गाइडलाइंस नहीं कहते, ऑडिट प्लान नहीं कहते, उस और ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं कहते. उस चीज को ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं. इंस्ट्रक्शंस को, उस प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस होती हैं. ओके, नेक्स्ट. इश्यू ऑफ जनरेशन ऑफ स्क्रैप has been overlooked in detailed set of instructions given to the engagement team. Now audit program में लिखा हुआ है, ये लिखना रह गया कि स्क्रैप के बारे में भी कुछ चेक करना है. तो व्हाट शुड बी द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर सीए सिमरत कौर? इनमें से कौन सा व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन? What should be the right option? Yes. What should be the right option in question 5? She should ignore this information. She should modify her earlier set of instructions. She should leave the matter to the wisdom of engagement team, or she should put the ball in the court of management as she was not provided with complete information earlier. क्या करना चाहिए उसको? यस, क्या करना चाहिए उसको? जब उन्होंने ऑडिट प्रोग्राम बनाया तो उसमें स्क्रैप के बारे में कुछ भी लिखने से रह गया कि स्क्रैप के बारे में क्या क्या स्टेप्स वेरीफाई करने हैं, उसके बारे में लिखने से रह गया. ओके, तो व्हाट शुड बी प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर सीए सिमरन कौर? अब उसको क्या करना चाहिए? जो चीज गलती से रह गई लॉजिकली, अब उसको ठीक करना चाहिए. सो वो कैसे ठीक होगी? वो ठीक होगी, शी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. शी शुड मॉडिफाई अर्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. शी शुड मॉडिफाई अर्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. नाउ आप कुछ स्टूडेंट्स डी लिख रहे हैं. डी इज द रॉन्ग आंसर. शी शुड पुट द बॉल इन द कोर्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड शी वाज नॉट प्रोवाइडेड विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन अर्लियर. ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ स्टूडेंट्स. अगर पहले कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं है, अब वो उसके असिस्टेंट्स, आप टीम मेंबर्स वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो शी शुड मॉडिफाई हर अर्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो हमने स्टूडेंट्स वी हैव लर्न दैट ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट ए रिजिड प्रोग्राम. इट हैज गॉट द फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, it has got the flexibility. It is not a rigid program that once we have formed it and then it can't be changed. It is not that way. So clear है students? Question number 5 का आंसर B. 5 is answer B. Okay. So आप स्टूडेंट्स आपकी क्वेरीज देख लेते हैं. What are your queries?
So now let us respond to your queries. Yes. Yes, Sangeeta, you are asking what is meant by WRT. WRT, Sangeeta, means with respect to, उसके रेफरेंस में जहां आपके मॉड्यूल में WRT लिखा है उसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू। यस मीनाक्षी, इटरेटिव, इटरेटिव का मतलब है रिपीटेटिव, कमिंग अगेन एंड अगेन, दोबारा आ रहा है, जो बार बार हो रहा है। Keshav, Keshav, you are writing that audit documentation is pending in the last class. Audit documentation जो audit plan की है वो है discussed. Probably you were not there. I am again telling you that the auditor has to document audit strategy, audit plan, and significant changes made to it. He has to put it in writing. It is his duty, it is his responsibility to document it. Okay. प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, यस मानसी गुप्ता, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज अभी केस स्टडीज में भी आया। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में ऑडिटर sees that whether assignment should be accepted at the first place or not, and in case of existing audits he sees whether that relationship with the client should be continued or not. And the auditor also sees whether he complies with the ethical requirements like that of independence. This is also a part of preliminary engagement activities. And third thing about preliminary engagement activities is that he makes it sure that engagement terms are understood by the management and there is no misunderstanding. So all these three things are coming under the category of preliminary engagement activities. Yes. Pawan, how to recall the concepts? Pawan, आपको इसको समझ के इसको याद करना पड़ेगा और याद करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो आपको खुद ही करनी है, वो कोई करवा नहीं सकता। आपको इन चीजों को, कंसेप्ट्स को रिमेंबर करना पड़ेगा और एक हैबिट बनानी पड़ेगी याद करने की। आप 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी आए लेकिन आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। Yes, Priyanka Pandey, you are asking in services what particular would we need to check? जब आप किसी सर्विस कंपनी का ऑडिट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको जो उसके डॉक्यूमेंट्स है प्रियंका उस पे जाना पड़ेगा। कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सबसे पहले तो उस कंपनी की नेचर ऑफ सर्विसेज के बारे में समझना पड़ेगा और उसका कंट्रोल सिस्टम देखना पड़ेगा कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो सब सर्विसेज जो है वो अकाउंट फॉर करने का उसका सिस्टम क्या है, उसका कंट्रोल सिस्टम क्या है।
ओके। अनमोल, हु इज एंगेजमेंट पार्टनर? इज ही ए पार्टनर ऑफ दैट ऑडिटर? एंगेजमेंट पार्टनर अनमोल हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। जब भी कोई ऑडिट फर्म ऑडिट करती है, ठीक है, तो उसमें एक आदमी को, जिसने रिपोर्ट साइन करनी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिसको हम एंगेजमेंट पार्टनर कहते हैं। से ऑडिट फर्म में 5 पार्टनर हैं, तो पांचों तो उस ऑडिट को देख नहीं रहे, उनमें से एक ही आदमी तो रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है, जिसने अल्टीमेटली ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करने हैं, उसको एंगेजमेंट पार्टनर कहते हैं। और अगर ऑडिट फर्म में सिंगल वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोई पार्टनर नहीं है, तो उसको भी हम, then in that sense he is the only engagement partner, although he is not partner, but he is the sole person responsible for the engagement. ओके, क्योंकि ऑडिट फर्म्स में नॉर्मली पार्टनर्स होते हैं, बड़ी बड़ी फर्म सब पार्टनरशिप फर्म्स हैं, तो इसलिए इनको द वर्ड जो है एंगेजमेंट पार्टनर यूज किया गया है। ओके, तो इज इट क्लियर टू यू अनमोल? Gunjan, audit program in Hindi. Now you must have understood about audit program. Yeah, Tunishka, what is interim financial information? Interim financial information is information which relates to some date which is not at the end of a year, which pertains to some another time in the year, like say at the end of quarter, say we are discussing about financial year 22-23. So the any date which is not 31st March 23 is called interim date. So financial information pertaining to that date would be interim financial information, like 31st December 2022. It would be interim date, and financial information pertaining to this date would be interim financial information. Okay. Yes, Vishali Bindal, informed opinion. Informed मतलब well considered opinion. Parth, which of the lines we should write in exams for definition? Definition students आपको remember करनी पड़ेगी, and write as it is, as it appears in your module to the extent possible. Yes, Srinivasan, you are asking how engagement partner prepares list of verification procedures. So we have discussed all the points which has to be kept in mind by the engagement partners for designing his audit program. So this is how he prepares verification procedures. First, he would understand the company, he would understand its controls. Okay, he would understand the regulatory requirements, and then he lists out verification procedures. Okay. Yes. यस मानसी गुप्ता, जो चैप्टर 2 में की लर्निंग पॉइंट्स हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं आपके बीयूएस साइट पे, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स आपको दिखा भी देता हूं कि की लर्निंग पॉइंट्स जो अपलोड किए हैं ये, तो ये
चीज में, इस चैप्टर में चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. So these things you do not leave. These are the key learning points. These I have already uploaded at the BOS website. So students, those who are interested in seeing what is important in this chapter, they can see. So these are the points. Understand why planning and audit is necessary. Advantages of planning and audit. Remember that planning is an iterative process. You have to remember this. This is a key term. Remember elements of planning. So understand meaning of preliminary engagement activities and type of activities. So these kind of things I have uploaded the page. So those of you who are interested in seeing what are the key areas in chapter 2 can go through this page. Okay. और मानसी, अगर आपको किसी के आपको प्रॉब्लम आ रही है नोट इनको चीजों को एक्सेस करने में जो हम बीओएस पे अपलोड कर रहे हैं, तो आप बीओएस से कांटेक्ट कर सकते हैं. नाफिया शेख. एडिक्वेटली मींस कंप्लीटली. एडिक्वेट मींस कंप्लीटली. यस. मीनाक्षी त्रिपाठी. ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर. सिंपल. ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर. Yes, Gunjan Kumari. Setting forth the procedure means. Setting forth the procedure means कि जो प्रोसीजर वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जो प्रोसीजर्स हैं वो उसके सामने है. सेटिंग फोर्थ द प्रोसीजर. नाउ अनमोल पटवा, यू आर आस्किंग. What you are asking? You are asking me to explain point 5 again. Point 5 of constructing an audit program. Okay. So we again go to the chapter. Point 5 of constructing an audit program. Yes. Point 5 is include the audit objectives for each areas. तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको एक सैंपल ऑडिट प्रोग्राम दिखाया सेल के बारे में, तो उसमें ऑडिटर ये डिटरमिन करेगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल के बारे में क्या गलती हो सकती है, कहां पे मिस स्टेटमेंट कौन सी किस टाइप की हो सकती है. ओके. उसका ऑब्जेक्टिव क्या कि कोई रेवेन्यू अनरिपोर्टेड तो नहीं, कि रेवेन्यू में गलती तो नहीं, या जो सेल्स आ रही हैं वो एक्चुअल में सेल्स हुई ना हो, फेक बिलिंग हुई हो. तो वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के हिसाब से वो ऑडिट प्रोसीजर्स आपने डेवलप करेगा जो कि ऑडिट प्रोग्राम में होंगे. ओके. सो अनमोल, क्लियर टू यू? सो मुक्तेश्वरी, सेम पॉइंट यू आर आस्किंग. यस. Devender Singh, we have to develop that ability, but what is your duty? Yes, Devender Singh, my duty is to inform to you. Okay. अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे. तो मैं तो स्टूडेंट्स आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप अपनी उस एबिलिटी को डेवलप करें, कि आपको पता चलना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है. जो इंपॉर्टेंट है वो तो हम बताएंगे ही. यस. आस्था, वेयर वी कैन गेट द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर? बीओएस की वेबसाइट पे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किस फॉर्म पे आते हैं, और उसी फॉर्म पे आते हैं. ओके. नो दिव्या, राजीव सर इज नॉट कमिंग टुडे. Yes, Tushar, what do you mean by deficiency?
डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमियां तुषार, कमियां। सो डेफिशिएंसी, मैं आपको इंटरनल कंट्रोल के बारे में डेफिशिएंसी बता रहा था कि कंट्रोल सिस्टम में क्या डेफिशिएंसी है, क्या कमियां है। सपोज कंपनी का, सपोज आप इंटरनल कंट्रोल कंपनीज के वेजेस के बारे में चेक कर रहे हैं, और कंपनीज ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हर एक सेक्शन की वेज शीट एक मिस्टर एक्स से साइन होगी, सपोज। ओके, आप कंट्रोल सिस्टम चेक कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मिस्टर एक्स से साइन वो नहीं हो रहा कुछ केसेस में, तो दिस इज डेफिशिएंसी। ये कमी है जो कि आप मैनेजमेंट को बताएंगे ताकि मैनेजमेंट करेक्टिव एक्शन ले सके। ओके, क्लियर तुषार? Abdul, you are asking again, explain once ADV. What you are asking, Abdul? It is not clear. Once ADV, explain what you are saying. Yes, Devender Singh. He is asking meaning of tends. Tends means a tendency. Tends, probably it was used. Let me find out where it was used so that I am in a better position to explain to you. Tends. Yes. It is in the disadvantage of audit program. So the program often tends to become rigid. इसका मतलब है कि प्रोग्राम रिजिड होने की कोशिश करता है। जब एक चीज राइटिंग में लिखते हैं तो वो एक, इट हैज ए टेंडेंसी टू बिकम रिजिड। जब भी हम कोई चीज राइटिंग में लिखते हैं तो इट हैज बिकम ए टेंडेंसी, इट बिकम्स इट्स नेचर टू बिकम रिजिड। ओके, सो इट इज इट क्लियर टू यू देवेंद्र? Yes, Devinder Singh, is it clear to you? Yes, Devinder Singh, you are again asking what is mum. I have already explained, mum is चुप रहना। मम का मतलब है चुप रहना। he decides to ignore it. Okay. Yes, sakti will. Yes, you are asking what is e-way bill. You are asking what is e-way bill. So e-way bills is a document, sakti will, which is generated on e-way bill portal under GST law. Whenever goods are removed from the premises of a company, from the factory premises of a company, exceeding a certain limit, exceeding rupees 50,000. So this is when you move goods out of your factory, you have prepared a sale invoice. Simultaneously, you would have to go to a portal, e-way bill portal, where you have to prepare an electronic bill, e-way bill, which shows that uh, what are the particulars of sales invoice, what are the particulars of transport through which the goods are moving. So you would be reading about e-way bills in your indirect tax law paper, GST paper.
Now, Shivam, if you are saying if there is one or two, so obviously the auditor would be applying his professional judgment. कई बार गलती भी हो जाती है, कोई बिल गलत भी बन जाता है शिवम गौतम, तो उसको कैंसिल करना जरूरी भी हो जाता है। लेकिन सस्पिशन कब अराइज होता है? जबकि लार्ज नंबर ऑफ ईवे बिल्स कैंसिल हो रहे हैं, कि सभी गलत बन गए, क्यों हो रहा है ऐसा भाई? तो ये तो ऑडिटर पूछेगा ना। Yes, Devender Singh, you have written he should not be mum but ask for the reason. Yes, that is right. Keshav, what does it mean of PQR with date? So Keshav, ये आपके ऑडिट प्रोग्राम में लिख, सैंपल ऑडिट प्रोग्राम मॉड्यूल में दिया है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय पी एंड रिव्यूड बाय के. So it only means that it is name of a person. A, B, C or X, Y, Z. It only means that it is the name of a person. Yes, again, Devender Singh, what is material misstatements? Material misstatements, मैंने चैप्टर 1 में भी बताया था, material misstatements are significant misstatements. Significant mistakes you can understand, which may arise due to errors or frauds. Okay, so significant mistakes arising due to errors or frauds. ऑडिटिंग में देवेंद्र सिंह हम मिस्टेक्स वर्ड यूज नहीं करते, हम मिस स्टेटमेंट्स वर्ड यूज करते हैं. वी यूज द वर्ड मिस स्टेटमेंट्स. मेटीरियल मीन्स सिग्निफिकेंट. दोनों चीज, मेटीरियल क्या है डिटेलिंग में एसए 320 में पढ़ेंगे, मिस स्टेटमेंट्स क्या है उसकी डिटेल डेफिनेशन हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में. Yes, Srinivasan, again you are asking to explain the answer for question 2 of case study. ओके, हम दोबारा केस स्टडी पे चलते हैं. क्वेश्चन 2 था कि लोकेशन ऑफ ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस हैं, कहां पे सिचुएटेड है और कितने टाइम में ऑडिटर ने काम खत्म करना है. ये किसका पार्ट है, ये किसका फैक्टर है? this relates to establishment of audit strategy. It does not relate to development of audit plan, because in audit plan describes planned procedures. These things are decided initially at the time of establishing overall audit strategy. और audit program तो इससे भी detailed है, तो C can't be the answer. And designing risk assessment procedure is again part of developing audit plan. So this is also not the answer. So if you go to your module, Srinivasan, you would see that in the factors which are mentioned in the module for establishing an overall audit strategy, it is there. All these 3 factors are written there. Yes, Kadambari, you are saying physical examination is out of the scope of auditor, then how we can verify the stock physically? कादम्बरी, आप रेलिवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि जब ऑडिटर व्हेन ही वेरीफाइज inventory counting process, he is also responsible for verifying the condition of inventories. तो जब कोई चीज मैं देख रहा हूं, so I would see whether
stock of, if I am talking about say stock of ready-made garments, so I would see whether these garments are existing and what is their condition. So it includes physical examination in this aspect. Because condition, why it is important? Because condition is related to valuation. So lamba ho jayega. So I would explain it to you when we come to chapter 4. Yes, Mamta Yadav, what it means that the assistant to keep an open mind. So already explained Mamta that he should keep open mind to see the things happening around him, to see that that if there is some contradiction between what is written in the audit program and between what one is observing during the actual course of audit, during the actual performance of audit. Okay. Yes, evolving. Ajay Chauhan, evolving. Meaning of evolving is which is continuously developing. A thing which is continuously developing. It is not that. So audit program is continuously evolving as the audit goes on. कोई नई चीज आती है तो audit program को उस उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर लिया जाता है. ओके. Yes, Pooja Gupta, audit strategy is a broad term. Yes, and audit program is part of audit strategy. Yes, audit program is part of audit plan. Mamta Yadav, again, assistant to keep an open mind. I have already explained. खुला दिमाग रखना चाहिए. Now, Parth Rana, you are saying which lines you have to consider in the definition of audit program. You can remember those lines which are there in the box item, and highlighted. Yes, and Hiba Bilal, she is saying, please explain test your understanding 3, page 2.18. So let us see what is this question. 2.18. Yes, the question is, CA Mary, while planning audit of a company, feels that she would inquire from in-house legal counsel of the company status of pending litigation matters to identify and assess risk of material misstatements. तो CA Mary है, वो एक कंपनी का ऑडिट कर रही है और she has planned before conducting audit, she is planning. So she is thinking that she would inquire from in-house legal counsel. In-house legal counsel means standing legal counsel which is there in the company. So there is a lawyer which is there in the company which advises the company on its legal matters. तो वो प्लान कर रही है कि वो इंक्वायर करेगी इन हाउस लॉयर से कि क्या क्या कंपनी के जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं या डिफरेंट लिटिगेशन मैटर्स हैं जिसमें कंपनी डिस्प्यूट में है, उसके बारे में पूछेगी. उसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके बारे में कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है. तो ये क्या कर रही है वो? व्हाट शी इज these procedures are known as. So students, remember always when procedures are used to
when the purpose of audit procedures is to identify and assess risk of material misstatements, these procedures are called risk assessment procedures. When purpose of procedures is to identify and assess risk of material misstatements, these are called as risk assessment procedures. Remember, so जहां भी एग्जाम में आपको लिखा हो कि its purpose is to identify and assess risk of material misstatements, it means these procedures are risk assessment procedures. Okay, and second part is where these identified procedures are included in planning, these are included in audit plan. क्योंकि जो planned procedure हैं, these are included in audit plan, whether these are risk assessment procedures or other procedures, these are always included in audit plan. Yes, Hiba, is it clear to you? Hiba, the question is clear to you? Answer, please confirm, Hiba Balal, if the answer is clear to you. No, Rahul, top level management cannot interfere while preparing audit program. It cannot. Audit program is sole responsibility of the auditor. Management cannot interfere. गुंजन कुमार, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैं कई बार बता चुका हूं, आप पुराने वीडियोस देखें. ममता यादव, प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट इन हिंदी. इसका मतलब है कि जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनके वर्क को रिव्यू करना. ऑडिट प्रोग्राम हर एक ऑडिट में कंपलसरी है मनीष कुमार, लेकिन स्मॉल बिजनेस के केस में ऑडिट प्रोग्राम बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्मॉल हो सकता है, कॉम्पैक्ट हो सकता है, छोटा हो सकता है. ओके, यस. पार्थ राणा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. ऑडिट प्रोग्राम में आप वो डेफिनेशन याद कर लीजिए जो कि बॉक्स आइटम में है, विच इज देयर इन द बॉक्स आइटम. मुक्तेश्वरी सोलंकी, by assertion level can we say that to considering judgment of management? Yes, assertions are all all pertain to management. Yes, you are thinking on right lines. Keshav Chaudhary, when we do audit, we have to check and verify data as on 31st March or as on, yes, we have to verify the data as on 31st March, but we have also to consider some events which have occurred beyond 31st March. So that also you would be reading in further chapters. Mainly we have to consider the data as on 31st March. You have Astha, you have to write the key terms. की टर्म्स आपको वही लिखनी है जिसके जो आपके मॉड्यूल में दी गई है. आंसर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. जैसे यू कैन नॉट चेंज द वर्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, यू कैन नॉट चेंज द वर्ड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, यू कैन नॉट चेंज द वर्ड स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट. ओके, you cannot change the word assertion, you have to write as it is. ये स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं पहले भी. संगीता, how to
identify this question given this mark, sir? Sangeeta, what are you precisely asking? I am not able to understand your question. Yes, Mamta Yadav, you are writing again auditor to have open mind. इसका मतलब हिंदी में ये है कि ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है तो उसको खुले दिमाग से सब चीजें देखनी है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, और कुछ चीज जो ऑडिट प्रोग्राम में नहीं लिखी है उसको वो प्रिंसिपल की नॉलेज में लाएगा, या कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज लिखी गई है जो कि जो अब वो ऑडिट परफॉर्म कर रहा है आदमी, और जो ऑडिट प्रोग्राम में लिखा है उससे उससे उलट है या उससे मेल नहीं खाती, तो वो ऑडिटर की, अपने प्रिंसिपल की, एंगेजमेंट पार्टनर की नॉलेज में लाएगा। यस, चैप्टर समरी अजय चौहान इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चैप्टर समरी अगर आपने चैप्टर कर लिया तो चैप्टर समरी ऑलरेडी आपको कर ली। चैप्टर समरी आपको हेल्प करने के लिए दी गई है, जैसे मैंने आपको की लर्निंग पॉइंट्स दिए हैं वैसे चैप्टर समरी है। यस देवेंद्र सिंह, जो की लर्निंग पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करती हैं, उसके सब्सटेंशियल एस्पेक्ट्स को। अगर आप इन पॉइंट्स को कर लेते हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, लेकिन आप पूरा चैप्टर पढ़ें जरूर और इन पॉइंट्स पे ज्यादा स्ट्रेस दें। चैप्टर एक बार पढ़ें जरूर पूरा। यस तुषार, योर मेल्स आर कमिंग, व्हाट इज योर क्वेरी? यस देवेंद्र कुमार, सब्सिक्वेंटली मीनिंग, सब्सिक्वेंटली प्रोबेबली आपने पूछा है ऑडिट प्रोग्राम के बारे में। आप शायद देवेंद्र, आप यहां से पूछ रहे हैं सब्सिक्वेंट एक्शन बाय क्लाइंट एंड बाय अदर्स। सब्सिक्वेंट एक्शन का मतलब है कि आपने क्लाइंट को कोई डेफिशिएंसी बताई, कोई कमी बताई, और क्लाइंट ने उस कमी के बारे में क्या एक्शन लिया। ये देवेंद्र सिंह आप आगे पढ़ेंगे कि जब आप ऑडिट करते हैं तो जो भी आप मिस स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करते हैं ये आपकी ड्यूटी बनती है मैनेजमेंट को बताने की। तो जब आप मैनेजमेंट को राइटिंग में बताएंगे तो आप ये भी देखेंगे कि मैनेजमेंट ने उसका सब्सिक्वेंट एक्शन क्या लिया, उसके बाद में आपके बताने के बाद क्या एक्शन लिया। सब्सिक्वेंट मींस आफ्टरवर्ड्स। ओके। यस, डिफरेंस बिटवीन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, मनीष कुमार, ये आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही समझ लीजिए। So guys, you understand this much, that risk assessment procedures are different from further audit procedures. We would be learning these in greater detail in chapter 4. Yes, Nanthini Devendra, what is your query? How to answer case scenario questions? Yes. So case scenario questions are MCQ based questions. You do not have to give reasons for that. So in the paper, the 30 marks paper is MCQ based and 70 marks is descriptive type. So in 30 marks, 10 questions are standalone MCQs, 10 MCQs है अलग अलग, और 2 केस स्टडीज आएंगी। देयर वुड बी 2 केस स्टडीज कंटेनिंग 5 क्वेश्चंस ईच, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। तो
one case study has 10 marks, another case study has 10 marks. Besides, there are 10 MCQs. So the total weightage of MCQs is 30. Okay. So while writing MCQs, you have to mark OMR sheet. Okay. You have to answer it separately. So you do not have to give reason. You have to study the case study and apply your knowledge. Yes, Devender Singh, you are writing advantages I mean of Abdul. What do you want to say, Devender Singh? Yes. Now you are right, Devender Singh. Trends means you have understood rightly. Tends here means tendency. Yes. Tends has been derived from the word tendency. Yes, Rahul, there are risk assessment procedures. You are asking, are there risk assessment procedures to reduce risk of material misstatement at assertion level? The purpose of risk assessment procedures is to identify risk of material misstatements. It is not to reduce, but it is to identify risk of material misstatement. Identify and assess क्या risk है. Now Pooja, you are saying ये सब लोगों की मेल मिल रही है. पूजा आप कह रही हैं कि TYK4 टेस्ट योर नॉलेज फॉर प्रोबेबिलिटी. यू आर सेइंग एसर्शन का मीनिंग भाविका वी वुड बी रीडिंग इट इन चैप्टर 4. मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं. टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 4 पूजा इज आस्किंग. Test your knowledge for. Now let us see what this question is. Yes. Which of the following is question number 4? Which of the following is not an advantage of audit program? कौन सा इसमें एडवांटेज नहीं है ऑडिट प्रोग्राम का? स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पूछ रहा है. It acts as a guide for coming years. So it acts as a guide for coming years. Yes, it is advantage. It fixes responsibility for assistants. It is also an advantage. It serves as a shelter for assistants. ये कोई एडवांटेज थोड़ा इसका. उसका ऑडिट प्रोग्राम का ये काम थोड़ा है कि असिस्टेंट्स को जो इनएफिशिएंट है उनको शेल्टर दे. इट सर्व एज ए प्रूफ ऑफ ऑडिटर. So this is also advantage. So C is the answer. Okay, Pooja, clear? तो देवेंद्र सिंह आप पूछ रहे हैं एग्जाम में वही आएगा जो मैं लिख के दे रहा हूं की लर्निंग पॉइंट्स में, या और भी आ सकता है? एग्जाम में कुछ भी आ सकता है देवेंद्र सिंह. उस चीज की गारंटी नहीं है. इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पूरा चैप्टर पढ़ें, लेकिन ये पॉइंट्स हैं जिनको आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका कैचमेंट एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे. क्योंकि ये चीजें इस चैप्टर के मेन एरियाज को कंसीडर करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अलावा कुछ आ नहीं सकता. दीज आर द ब्रॉड हिंट्स.
Yes, now Pooja, you are saying test your understanding. So let us see test your understanding. Four. Test your understanding. Four. Yes. It says that C is Shubhendu is statutory auditor of a social media company. एक सोशल मीडिया कंपनी है. ओके. उसका शुभेंदु जो है ऑडिटर है. ड्यू टू चेंज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट ने कुछ लॉ में चेंज किया है, तो इससे जरूरी हो गया है कि सोशल मीडिया कंपनीज के लिए कि वो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए. ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है कि जो कंप्लेंट्स हैं अपने कस्टमर्स की, अपने यूजर्स की, उनको एड्रेस करने के लिए. और अगर वो ऐसा नहीं करते तो बहुत उस कंपनीज पे पेनल्टी भी लग सकती है. ओके. सो इज अबव फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर? यस, while डेवलपिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी. तो ऑडिट स्ट्रेटेजी के बारे में डेवलप करने में ये फैक्टर तो बहुत जरूरी है. बिकॉज it would because all the changes in regulations, these have to be considered by the auditor while establishing audit strategy. This we have done right now. Yes, Devender Singh, what will be opposite of material? Opposite of material is immaterial, which is not material or non-significant. Okay, guys. So, guys, I also have with me some more MCQs. So let us do some more MCQs. Yes, guys. So it would clear to you many things. Choose the most appropriate option. Question number 1. An audit plan includes description of what? Yes, question number 1. An audit plan includes description of what? स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज करते टाइम कभी भी हरी मत करें. चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ें जरूर. चाहे आप 10 सेकंड में पढ़ें, चाहे आप 20 सेकंड में पढ़ें, लेकिन ऑप्शंस को पढ़ें जरूर टिक करने से पहले. मार्क करने से पहले ओएमआर शीट में चारों ऑप्शंस को पढ़ें जरूर, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मोस्ट सुटेबल आंसर लिखना है. नो देवेंद्र सिंह, इसका मतलब नहीं है की लर्निंग पॉइंट्स. की लर्निंग पॉइंट्स हैं, ये मेन लर्निंग पॉइंट्स हैं. आप इसको ये नहीं कह सकते कि चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा, बाकी एरिया में से कुछ नहीं आएगा. बाकी तो आपका सिलेबस है, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिंट दिए हुए हैं. हर एक, अब हर लाइन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि जो अनइम्पॉर्टेंट है वो एग्जाम में आ नहीं सकता. तो जब आप नोट्स भी बनाते हैं तो इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बनाते हैं ना. यस, क्वेश्चन नंबर 1. यस. An audit plan includes description of what? An audit plan includes description of what? Nature, timing and extent of planned risk assessment procedures, scope, timing and direction of audit, nature of audit evidence obtained,
scope, timing, and direction of performed risk assessment procedures. Yes. स्टूडेंट्स कुछ लोग ए आंसर दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं. स्टूडेंट्स आंसर इज ए. वी हैड अंडरस्टूड कि ऑडिट प्लान में क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स प्लस अदर प्रोसीजर्स प्लस फर्दर प्रोसीजर्स. ये कौन से प्रोसीजर हैं जो कि प्लान्ड है, क्योंकि अभी तो हम ऑडिट प्लान की बात कर रहे हैं. सो नेचर, टाइमिंग एंड रिस्क ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. ये तो हाउ यू आर राइटिंग डी, इसमें तो परफॉर्म लिखा है, इसमें तो वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर चुका है. हाउ, जो चीज परफॉर्म हो चुकी है वो प्लान में कैसे आएगा? टेल मी. सो माधव आपने डी है, डी कैन बी द आंसर. प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, ऑडिट स्ट्रेटेजी के बारे में है. नेचर ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड, ये भी जब ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेगा तो उसके बाद की बात कर रहे हैं. यहां पे तो हम प्लान की बात पूछ रहे हैं. तो आंसर इज ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड व्हाइल डेवलपिंग ऑडिट प्लान? Which of the following is considered while developing audit plan? Yes, guys. Which of the following is considered while developing audit plan? Answer is C. Second answer is C. Yes, Annie, you have written it correctly. So all these three, 1, 2, 3, these are considered while developing audit strategy. These are considered while developing audit strategy. This is also considered while developing audit strategy. Only this, determining how much work should be done taking into account sample of size, because this is related to the extent of audit procedures. So remember students, we had learned that audit plan includes description of nature, timing and extent of procedures. कितना काम करना है उस चीज के साथ ऑडिट प्लान रिलेटेड है. So Annie, you are right. So C is the correct answer. So understood, Mansi? Why B is not the correct answer? Because all these three things are factors in establishing audit strategy, whereas the question is about audit plan. Audit program is detailed audit plan. It is part of the plan, but it is series of steps which are to be performed. It is a detailed plan. You can say it is an audit plan. It is a detailed plan. Since it is a detailed plan, it is given a separate nomenclature. Actual how work is to be done, that is why it is given a separate name, audit program. Okay. So audit strategy and audit plan are what? Now study this question carefully. Audit strategy and audit plan are what? Are necessarily discrete process, are not necessarily discrete process, are not necessarily
are not closely interrelated, are not documented. Evolving means, Devinder Singh, the thing which is developing, which is continuously improving. I have already explained this also to somebody else. Audit strategy and audit plan are what? Audit strategy and audit plan are what? Necessarily discrete process, not necessarily discrete processes, not closely interrelated, not documented. Yes, what should be the answer? Audit strategy and audit plan are, answer is B, not necessarily discrete processes. So I told you guys, discrete का मतलब होता है separate. Although these are separate processes, but these are not necessarily separate processes, are not always separate processes, because development of one affects development of another. Okay. Number 4. Which of the following is not a factor to be taken into consideration while establishing overall audit strategy? इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है जो कि ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हुए यूज होता? यस, बताइए. क्वेश्चन नंबर 4. यस, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट शुड बी द आंसर? आइडेंटिफाइंग एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, ये होता है यूज. इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, ये भी होता है यूज. कंसिडरिंग कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, उसी हिसाब से ऑडिट प्लान बनेगी, उसी हिसाब से प्रोसीजर्स बनेंगे. कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, क्योंकि नेचर ऑफ प्रोसीजर्स क्या है वो हम कहां देखते हैं? दिस वी सीन ऑडिट प्लान. दिस वी डू नॉट सीन ऑडिट स्ट्रेटेजी. ओके, सो आंसर इज डी. यस, रीतो बनर्जी and many others who have answered rightly. Now question number 5. Preliminary engagement activities do not include. So 3 type of activities are included in preliminary engagement activities and 1 type of activity is not included. Yes, which one of the activity is not included in preliminary engagement activities? Yes, question number 5. Preliminary engagement activities do not include what? Yes, answer is C, preparation of audit plan. This is the right answer. This is not included in preliminary engagement activities. ये प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का पार्ट ही नहीं है, बाकी 3 चीजें प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का पार्ट है. Okay. Yes, Devender Singh, you are saying that it means to audit assistant should not think only up to audit plan. Yes, audit plan is a guide to him. Devender Singh, audit plan is a guide to him. But he has to keep his mind open and see that if it is not that he has to make his own plan. He has to go by the plan, but he has to see the things around him to see that if something which is happening around him or something which he is observing and which is a significant matter, it is not included in the audit program given to him.
Okay, so that is why we say that he should have open mind. Okay, guys, so this is all for today, and see you guys on Thursday. Next class is on Thursday on a new chapter, risk assessment on internal control. It is not on Wednesday. Okay, guys, so it's over for today. Thank you so much.